Moving on to the fifth question. Fifth question is nothing but in a circle of diameter 40 centimeter, the length of the chord is 20 centimeter. Find the length of the minor arc of the chord. तो अब आपका रेडियस डायमीटर कितना है 40 है, तो रेडियस कितना हो 20 होगा, और कॉर्ड लेंथ कितना आ रहा है आपका 20 है. तो अब अगर आप दूसरे एंड पे इसको ज्वाइन कर लें अगर, तो ये दिस विल बिकम इक्विलेटरल ट्रायंगल 20 20 20. तो डेफिनेटली एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज हाउ मच 60 डिग्रीज. इक्विलेटरल ट्रायंगल का 60 डिग्री हो गया. तो हमको एंगल का पता चल गया इसमें. अब हमको पता क्या करना है, इसमें आर्क लेंथ पता करना है. तो आपके पास गिवन लेंथ ऑफ द आर्क इज 20 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर. तो आर्क लेंथ क्या होगा, L इक्वल्स टू आर थीटा. वो फॉर्मूला यूज करना है. तो आपके पास थीटा क्या है 60 डिग्रीज है. 60 डिग्री को उसको आप रेडियंस में कन्वर्ट करो, तो 60 इंटू 180 बाई पाई बाई 180, दैट इज नथिंग बट पाई बाई 3 डिग्रीज. तो 60 डिग्रीज नथिंग बट पाई बाई 3. तो आपका जो है रेडियन आ गया आपके पास. आपके पास जो है लेंथ ऑफ द रेडियस है, तो लेंथ कितना होगा L इक्वल्स टू आर थीटा. सो 20 इंटू पाई बाई 3. 20 इंटू पाई बाई 3 इज हाउ मच 20 पाई बाई 3, बल्कि इसको आप लिख दो खत्म. दैट इज द लेंथ ऑफ द माइनर लेंथ ऑफ द आर्क इज नथिंग बट आंसर. Okay, moving on to the next one, that is sixth question. The question is, if in a circle, if in two circles arcs of the same length subtend angle 60 and 75 at the center, find the ratio of the radii. So इधर क्या है, given length of the arc is same, तो radius circles के different है. The different two circles actually, length of the arc is same, angles are different also, 60 degree and 75 degree. So इसमें use करना पड़ा L equals to R theta. So L is same, R1 theta 1 equals to R2 theta 2. That is the formula we have to use. So we have to find the ratio of the radii. So R1 by R2 will be R1 into theta 1 is 60, theta 2 is 75. R1 into 60 equals to R2 into 75. So R1 by R2 equals to 75 by 60. So if we simplify, we will get 75 divided by 5 by 4. That is the ratio of the radii. Moving on to the last problem. Find the angle in radian through which a pendulum swings if its length is 75 centimeter. Length of the pendulum is nothing but radius here. और pendulum swing कर रहा है, तो length of the pendulum क्या है, radius है. और जो swing कर रहा है उसकी length of the arc क्या है, that will be length L. So L by R. So L1 by R. L1 is 10 centimeter, 10 by 75, that is 2 by 15. Or second case, theta 2 is L2 by R. L2 by R is how much? L2 is 15 centimeter, 15 by 75. So we will get here 1 by 5 radians. So the third angle is again 21 by 75. So it will be 7 by 25 radians. Okay. So इसमें हमने तीनों angles निकाल लिए. Theta 1 is 10 by 75, that is 2 by 15 radians. Theta 2 is 15 by 75 is 1 by 5 radians, and theta 3 is 21 by 75, that is 7 by 25 radians. So the pendulum की length क्या है? That is nothing but the radius, and the length, the tip describes an arc of length 10, 15 and 21. These all are different lengths L1, L2 and L3, for which we can get the theta 1, theta 2 and theta 3.